अस्सलाम वालेकुम। अज़ान वक्त हो गया ना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कहाँ खड़े होंगे तर्जुमान? दोनों, एक इधर एक उधर। अच्छा, अमूमन कितना वक्त ले जाएंगे? दुगना? जितना मेरा वक्त होगा उतना ही आप लोग लेंगे या उससे ज़्यादा लेंगे? कम ना करें, खुलासा ना बना दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। अल्लाह ताला ने तक़वा का लफ्ज़ कुरान करीम में इतनी बार इस्तेमाल किया है कि इसकी कोई इंतहा नहीं, और शायद ही कोई और लफ्ज़ इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो। Le mot taqwa a été utilisé dans le Saint-Coran
tellement de fois que peut-être on ne peut pas imaginer un autre mot, l'usage d'un autre mot dans le Saint-Coran autant de fois. Ayelam ti se wala ni taqwa wa ila wen zoy ko yega ayagum so alqur'ana pokin nor wusu tini salba to mamse ti ko yega be alqur'ana pokin wen nam so ngom yilme wa hangom zoy wen nam to ye मुख्तलिफ़ पैरायों में मुख्तलिफ़ शक्लों में इसके बारे में तवज्जो दिलाई गई है। On a attiré l'attention des gens dans différentes formes et dans différentes manières. ton nan ta kanisa ba sunya ton nan ta kanisa ba taxo na kyangani nes wiso बल्कि एक मुसलमान जब शादी के बंधन में बनता है तो उस वक्त निकाह के खुतबे में 5 दफ़ा तकवा के बारे में ज़िक्र आता है। Même lorsque un musulman il est lié dans la relation de mariage, ce mot a été utilisé 5 fois dans les versets qu'on prononce pour l'annonce du mariage. ton sangis menga zoy wenna ma menga awan to wa furlo zinge ti wala wenna meng biligam ti san na wa to ndo furi furo le ko on alqur'ana ko on awazi senu wenna am sinye ti zoy wenna furo le ko तो तकवा की अहमियत का इसी बात से अंदाज़ा कर लें। Vous pouvez imaginer l'importance de taqwa à partir de cette chose. ton sangese ton nyame wala wen zoy ga nyoda ne ti le wa wa to tani silamba se wa ton ta so wa ko क्योंकि शादी मर्द और औरत एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे होते हैं और ना सिर्फ मर्द और औरत एक मुआहिदा कर रहे होते हैं बल्कि दो ख़ानदान आपस में एक ताल्लुक़ पैदा कर रहे होते हैं। Comme à travers le mariage, on commence une nouvelle vie et une famille qui commence aussi, et il y a 2 familles, il y a un pacte entre les 2 familles. C'est pour cette raison qu'on a attiré l'attention vers cette chose. ton sangese oui ma meng wotonga asinga wa furlo ya wenge bala furlo ya porin lazama na singe lazak na singe zinigli ton sangese yari kite ti wenna minti loyga mbene ba yi basuka ngela wala paga ni wala rawa yari kite wenna menga na sokose ti na pa man sin sama songa yinga ito wende अगर तकवा ना हो तो एक फसाद पैदा हो जाए मुआशरे में। S'il n'y a pas taqwa, donc il y aura un désordre dans la société. ton sangese wala hamilatu wenzo ay sankabe ya zama porin ti yazak porin ton na mi kame tanawa ye wanyo taba lalebe yar zama फिर एक मुसलमान औरत और मर्द के एक ताल्लुक़ में बनने के नतीजे में नए वजूदों की आमद होनी होती है। Et ensuite, par la suite de ces relations de mariage, il y a de nouvelles êtres qui doivent naître. C'est pour cette raison aussi on attire l'attention. ton sangese fudo pana ndoy bala ti rawnin pa ma wum no mbale fudo na ndoy me ti pa ma faida porin nyeme la wala biga la ton samoti na zinda wala pa ne ba bi betan soka ari ki no na men yele rasam ne da huye ma yinga me kidan ton e do wende अगर एक मुसलमान मियाँ बीवी तकवा पर कायम नहीं रहेंगे तो आने वाली नस्ल से के मुत्तकी होने की भी कोई ज़मानत नहीं। Si un mari et femme, ils ne vont pas s'établir sur le taqwa, donc il n'y aura aucune garantie pour les gens qui seront naître à travers cette relation. ton sangese fudo san loy ti wenzo ya kabe fudo loy porin wa ton na mi kame fudo na wato yi wala kom nisa ton na mi kan ti ko pa na yi bara kwamba o pana le bi be o kwam yase तो ख़ुलासा ये कि तकवा एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसके बगैर खुदा ताला से मिलने और उससे ज़िंदा ताल्लुक़ जोड़ने का तसव्वुर ही गलत है। On peut résumer cette chose que sans taqwa, on ne peut même pas imaginer le rencontre avec Allah et avoir l'accès avec Allah. ton sangese ye bam na ko ya gom da ton fahame la da bange ti wenzo ay kalam exam da wenzo ay ga it batem pa man se wende it batem pa de mo me lebe gom de wende आज इसी बारे में चंद बातें कहूँगा। Je vous dirai certaines choses sur ce sujet aujourd'hui. wennam sansa ke mam nango man ni yamba ni wala ngom wenzo ay ga ni ngom lam nangom ni yamrunda windiga ये आयत जो मैंने तिलावत की है इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो यकीनन हमने तुम्हें नर और मादा से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया। Ce verset que je viens de réciter, Allah dit dans ce verset que oh les gens, je vous ai fait naître à partir de mâles et femelles.
tõnd sã n gese aya ning bãmba sẽn na n wa karema yaa zĩig ninga wẽnnaam sẽn yeele tɩ yaa yãmb sɩd kõtba m naana yãmb ãdem-biisã tɩ yi paga la rao pʋgẽ ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको afin que vous arriverez à vous reconnaître entre vous. la m maan yãmb tɩ ya leb yaa buud la m maan yãmb tɩ ya buud toɛɛ-toɛya tɩ bõe yĩnga tɩ na paame n bãng yãmb na paame tɩ bãngr yãmb ne taab sʋk kẽ बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। Certainement, le plus respectable entre vous est celui qui a plus de taqwa. la wẽnnaam yeelame mam sẽn naan yãmb tɩ ya buud toɛɛ-toɛya tɩ paam n bãng taaba la ned wo ned sẽn tʋg n yɩɩda waoogr mam taoore yaa ned ning sẽn yɩɩda yãmb wẽn zoɛɛga यकीनन अल्लाह दायमी इल्म रखने वाला और हमेशा बाखबर है। Certainement, Allah, il est omniscient et il connaît toutes les choses. tõnd sã n gese wẽnnaam a yaa tõog naaba wẽnnaam a yaa mita nin-bũmba fãa gil kyape तो अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि तुम्हारी छोटे कबीलों या बड़े कबीलों की शक्ल में जो तकसीम है ये सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए है। Allah nous a indiqué ici que votre division entre les différentes tribus, petits ou grands, c'est simplement pour la reconnaissance. tõnd sã n gese wẽnnaam wĩnga tõnd kaane tõnd bãng tɩ yẽnda sẽn na n tõnd kõbg toor-toora ne miid la ne pɛɛla pa bõn-zẽng yĩnga yaa tõnd na paam n bãng taab bala अब देख लें यहाँ अफ्रीका में भी और आपके मुल्क में भी छोटे छोटे इलाकों के चीफ़ हैं और फिर कई चीफ़ किसी बड़े चीफ़ के मातहत हैं। Vous verrez ici en Afrique même qu'il y a beaucoup de chefs qui sont petits chefs et ensuite ils sont sous un autre chef qui est plus grand chef. tõnd sã n ges ba afrik tõnd ninsabs pʋgẽ n kaane d neam tɩ nanamsã yaa wʋsg n be kaane nanam bãaneg be be nanam bɛd me le be be tɩ nanam bãanegã bãmb n be nanam bɛda tẽngre और फिर ये सब मिलकर मुल्की सतह पर एक कौम है। Et ensuite, ensemble, ils font une nation au niveau national. a tõnd sã n gese b fãa kɛp lagma taab bala n ya zãma yembre tɩ d vɩɩmã yembre इसी तरह दुनिया के तमाम ममालिक में भी इसी तरह की तकसीम है। C'est la même division qu'on trouve partout dans le monde. tõnd sã n gese pʋɩs ning sẽn pʋɩ tõnd ninsabs pʋgẽ n ka wã dũni wã wen vɩɩsa a naasame yaa pʋɩ-kãngme bala n get n be be तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो तकसीम है इसको अपनी बड़ाई की अलामत न समझो। Donc Allah nous dit ici, Allah nous indique ici que ne considérez pas cette division pour une chose de la fierté pour vous. tõnd sã n gese wẽnnaam yeelame tɩ tõnd sõng tɩ wala yẽnda sẽn na n tõnd toɛɛ-toɛya zɩlmã yõs taaba tɩ buudã yõs taaba rɩ wara tʋg n maan tõnda beem tɩ d wa maoon n taab zĩnd n taar n koong ye तुम्हारी बड़ाई बड़ा कबीला होने या ज़्यादा अमीर मुल्क होने से नहीं है। Vous n'avez pas votre fierté par rapport à être un grand tribu ou un pays qui est plus riche. tõnda sãamd sũuri maa tõnda wa tʋg n zĩ wẽed maan yɩɩle tɩ wẽnnaam fo bɩa buud ninga sẽn ya wala bu-galeng pʋgẽ maa fo bɩa wala buud ninga sẽn ya tags pʋgẽ ye बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा वही शख्स है, वही कबीला है या वही कौम है जो तकवा में सबसे आगे है। Chez Allah, aux yeux d'Allah, le plus grand est celui qui possède plus de taqwa. wẽnnaam sẽn dar bũmb ne tõndo la a baoor bũmb ne tõndo pa tõnd buud rãmba pa tõnd yel baa yembre yaa wẽn zoɛɛga la wẽnnaam baoor ne tõndo और याद रखें कि तकवा का मयार अपनी नेकियों के इजहार से नहीं होता। Vous ne devez pas oublier que le niveau de taqwa, on ne peut pas avoir en montrant les œuvres que vous faites. a yeelame tõnd sẽn yetɩda wẽn zoatba wẽn zoɛɛg yaa bũmb sẽn be sũuri d ra wa tʋg n dɩka n wẽneg wa dũniyã rãmba tɩ fo zota wẽnnaam ye ne wala tʋm tɩ vẽneg pʋgẽ ye बल्कि ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमारी हर हरकत और हमारे हर फेल से बाखबर भी है और इसका इल्म भी रखती है। C'est plutôt l'être d'Allah qui connaît tous nos œuvres, tout ce que nous faisons, et il n'ignore rien du tout. tõnd sã n gese tʋʋmd wo tʋʋm tõnd sẽn wa n tʋʋmda yaa tʋʋm sõng t'a tʋʋm wẽnga bɩd bãnge tɩ wẽnnaam yaa mita ne bũmb ning sẽn solge la bũmb ning sẽn vẽneg fãa gil kyapi अल्लाह ताला को सब इल्म है कि कौन सा फेल दिखावे की खातिर किया गया है और कौन सा फेल अल्लाह ताला के फजलों को समेटने के लिए किया गया है। Allah sait toute œuvre que vous faites pour la cause de la vanité, ou vous avez fait ça pour chercher le plaisir d'Allah. wẽnnaam yeelame bũmb fãa kyapi yãmb sẽn tʋme na n ba wẽnnaam nonglem wẽnnaam yaa mit ne tʋʋmd yẽne तकवा के मुख्तसरन मानी बताता हूँ
तकवा का मतलब है नफ्स को ख़तरे से महफूज करना। Je vous dirai brièvement la signification de taqwa. Le taqwa veut dire protéger notre âme. wẽnnaam yeelame tɩ bãmb na n wĩnga tõndo wala wẽn-zoɛɛgã maana wẽn-zoɛɛgã maana wã pa bũmb zẽnga yaa tõnd gũusi d meese ne wẽnnaam sẽn gɩdg toor sẽn tõnda kẽngã d gɩdgd kamse n yɩ wala yɛl nins wẽnnaam sẽn gɩdga और शरी इस्तिलाह में तकवा का मतलब ये है कि नफ्स को हर उस चीज़ से बचाना जो इंसान को गुनाहगार बना दे। Selon le terme religieux, le taqwa veut dire protéger l'âme contre toute autre chose, toutes les mauvaises choses. tõnd sã n gese la sɛg wa sɩlaad maana pʋgẽ b sa wa tog ye tɩ wẽn-zoɛɛga a pa bũmb zẽnga ya ãdem-bi gɩda fo menga yõora n yɩ yõor yam leed pʋgẽ wã gɩdg menga yõora n yɩ wala tʋʋm kɩt tɩ sẽn pa segd wẽnnaam daabã pʋgẽ और ये तब होता है जब ममनुआ अशिया से भी बचा जाए, बल्कि उसके लिए बाज़ औक़ात जायज़ चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है। Et ça peut arriver le moment que vous arrivez à vous protéger contre les choses interdites. Et des fois, vous devez même vous empêcher de faire les choses qui sont permises pour vous aussi. a yeelame tõnd sã n wa tʋg n gɩdge tõnd sã n wa tõgd yõyã n gɩdga t'a yɩ wala yɛl nins ya tʋʋm kiti wã tõnd na n mikame tɩ wakat kãngã yõorã meng n na n noma meng mosã n tũud bũmb ning wẽnnaam sẽn sagla la wẽnnaam sẽn data मसलन रमज़ान में पाक और जायज़ चीज़ों से भी एक मोमिन अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से रुक जाता है। Par exemple, pendant le mois de Ramadan, les choses qui sont permises, les choses qui sont pures, on doit s'abstenir de toutes ces choses-là même. tõnd sã n ges yaa wala no-loeer pʋgẽ wã tõnd sẽn lot noora yɛl nins yab halaala rɩɩbo la yũubu la kẽed n taara ne wã fãa kɛp ya bũmb sẽn maane t'a ya halaale ne mumin fãa gilli la d gɩdgd meng n yɛl kõyã pʋgẽ तो बहरहाल असल तकवा ये है कि अपने आप को हर उस चीज़ से बचाना जो गुनाहों की तरफ ले जाए। En bref, le taqwa veut dire protéger l'âme contre toute autre chose qui peut nous mener vers les mauvaises choses. gomda koɛɛga la tõnd bãng tɩ sã n yetɩ wẽn-zoɛɛgã tar maana ya tõnd gɩdg tõnd yõora yɩ yõor yam leeda pʋgẽ wã n yɩ tʋʋm nins ya tʋʋm gɩdgdse la ya tʋʋm kɩt tɩ wẽnnaam pa rata और ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी कौम का हो। Et il est obligatoire pour tout musulman, quelle que soit sa nation, quelle que soit sa race. tõnd sã n gese wẽn-zoɛɛga a yaa bũmb sẽn ya waagiba ne wala tõnd sɩlaamba zem tɩ fo sẽn yɩ buud ning pʋgẽ fãa kɛpɩ wẽn-zoɛɛga bũmb sẽn ya waagib ne tõndo अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तुम फ़लाँ कौम के हो जो अमीर है इसलिए तुम्हें कुछ छूट दी जाती है। Allah ne va pas vous poser la question que comme vous appartenez à telle ou telle tribu, c'est pour cela que vous aurez certaines facilités. tõnd yeelame tɩ wẽnnaam pa na n sʋk tõndo wala alkiyaoom daare fo sẽn yɩ buud ning pʋgẽ ye ya tʋʋm ning fo me sẽn tʋm n sa wa bala la wẽnnaam na n wa sʋk tõndo dɩ lel-kõngã wã a lebga bũmb sẽn ya faaga ne tõndo या तुम फ़लाँ कौम के हो जो तरक्की याफ्ता नहीं इसलिए छूट दी जाती है। Ou que vous êtes un peuple qui n'a pas fait de progrès, c'est pour cette raison que vous allez avoir les facilités. tõnd sẽn gesa wẽnd sẽn maan yɛl nins n kõ tõnda a ya yɛla tɩ tõnd sã n tũba tõnd na n mikame tɩ tõnd na n paama taoor kẽngre d wẽn-zoɛɛgã pʋgẽ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे ये उज़र काबिल कबूल नहीं होंगे। Allah dit plutôt que ces prétextes ne seront plus acceptés, ne seront pas acceptés de vous. a yeelame tõnd sã n wa tʋg n tʋmd wa tʋʋm yooda a pa bũmb ninga wẽnnaam sẽn na wa sake n deed n tõnd n yara tõnd n tʋʋm kãn ye इसलिए हर एक को अपने आप को हर बुराई से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। C'est pour cela que chaque personne doit faire des efforts pour protéger contre toute mauvaise chose. ya rɩɩng n kɩte tʋʋm kisi wã wẽnnaam sẽn pa rat ba yĩnga n kɩt wẽnnaam sagl sɩlaam fãa kɛpɩ t'a modg n gũya yõora n yɩ wala tʋʋm kiti wã ne yõor yam leeda fãa pɔgbo और हर नेकी को बचा लाने के लिए तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। Et pour faire de bonnes œuvres, on doit faire en œuvre toutes les capacités qu'on possède. a yeelame bũmb ning tõnd sẽn na n tʋm n paam wala wẽn-zoɛɛga d sõmba me maan ned pãng wʋsgo n paam tɩ paam tɩ wẽn-zoɛɛga wa kẽed sũ-yũngã तभी हम कह सकते हैं कि हम इमाम ज़मान की जमात में शामिल हैं। C'est à ce moment-là que nous pouvons dire et nous pouvons déclarer que nous faisons partie de la communauté des Imam al-Zaman. tõnd sẽn wat n na n gɩdgd mensã yɩ yõorã yam leeda pɔgba la d gɩdgd mens yɩ tʋʋm kiti wã ya wãnkat kãng wã tõnd tõe n yals n yeele tɩ tõnd bãngar zamaana limaam tõnd ya zamaana limaam me pʋgdse याद रखें कि तमाम बुरी बातों से उस वक्त बचा जा सकता है जब दिल में खुदा ताला की खशियत हो। Vous ne devez pas oublier qu'on peut éviter toute mauvaise chose le moment que vous avez la crainte d'Allah dans vos esprits. tõnd sã n gese
ton ton en gidga de mense yiyel kiti wa ri tum ni sin ya wala zunub tum namba gid fa kyapi wan katra ninga ton watan pa moyen zoyga tabet suyunwa अल्लाह ताला का ऐसा खौफ हो जिससे उसकी मोहब्बत भी जाहिर होती हो. On doit avoir une telle crainte d'Allah qui montre aussi l'amour en même temps. ton hingesa yala yibu la wen nam dik fa wata ba ni la wen zoyga la wen nam nongolum la ton sa wato pa moyen zoyga ton mi kila wakar ko mosa ton wen nam nongol me zoya me wana wen zoyga और ये बातें तब मिलती हैं जब उसके आगे झुका जाए, उससे मांगा जाए. Et ces choses on peut obtenir le moment qu'on s'incline devant lui. woto ton ton pa ma yala yibe yenda hansi bumuninga wan katra ninga ton son nang ko de me sa yoya en to gal wende ये दुआ की जाए कि ऐ खुदा, मैं तेरी मोहब्बत में उस तमाम बातें छोड़ना चाहता हूँ जिनके छोड़ने का तूने हुक्म दिया है. On doit prier que, oh Allah, je veux abandonner toutes choses, ce que vous avez demandé pour ton amour. ayela me tisilam fa ki api ko wen ko so la fo mo ko so wende bunning fo hangi tamam ya tum be da gil fa ki api ko to flame to ko mam tongo tum gid ko miora yi wala tum kiti mo fa gil ki api fo wen nam no lo minga और वो तमाम बातें अख्तियार करना चाहता हूँ जिनके करने का तूने हुक्म दिया है. Et je veux obtenir toutes les choses, et je veux opter pour toutes les choses que vous avez demandé à faire. wende mana niya lam ko to flame to ko mam tongo ti bum wo bum fo han sakal mam sin ya wala man ga tumde bif ko mam tum yene fo wen nam no lo minga लेकिन तेरा कुर्ब पाने के लिए भी तेरा फजल होना ज़रूरी है. Mais pour avoir ton proximité, il faut avoir tes grâces. ayelam disa ya woto ton san tum kanya e ton ya me ya mo pa mo menga yol so ए अल्लाह, अपने फजल से मुझे तकवा अता फरमा. Oh Allah, tu m'accordes ta grâce à travers tes bénédictions, à travers tes grâces. wenam reer ton doga lahman ton nema nif nema yala ngapoge नमाज़ों में रो रो कर अगर अपने रब से मांगेंगे तो अपने वादों के मुताबिक वो ज़रूर हमारी दुआएं सुनेगा. Si nous allons pleurer dans nos prières, Allah va nous accorder certainement selon ses promesses. ayelame ton san sidi le sunya nam ko wenam tawre nam bo so wende tayile ko sunya ti bahtu mi gidi la lebe yile ko sunya ton tum ni ya wenam sakala ton nam mi kame wenam nam pizza wala al kawla ni tondo tanam pizza yalla e ndat buni ngam kondo बस सबसे पहले हमें अल्लाह ताला के हजूर झुकते हुए अपनी नमाज़ों को, अपनी दुआओं को उसके लिए खालिस करना होगा. Avant tout, nous devons spécifier nos prières pour Allah, en s'inclinant devant Allah dans nos prières. ayelame bunning fa kapi ton hondat wennam nenge illa yimir pusa wan katani ton wan pu wennama wan kar kanga dar som yalla kat suya ko wennam nimbum wo bum ton hondate si wala dunila tawd managade और यही बुनियादी चीज़ है. Et c'est ça la chose fondamentale. ti ya woto menga la yella men nyagara ya fo ko wennama pusa ponga yella men nyagara ya zikanga अगर नमाज़ों में ज़ौक़ और सुकून मैसर आ गया तो समझें सब कुछ मिल गया. Si nous arrivons à trouver cette tranquillité pendant les prières, nous avons obtenu toutes choses. ton mi kame ton sampam ti ganga menga la wen zoyga be wala pusa ponga ton bang pusa tur sa fa kapi tunde ton na mi kame ti yer soma bumba fa kapi wa wennam nam kono la men kotondo नमाज़ों में ख़ास तौर पर ये दुआ करें जो हमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है. Prier spécialement pendant les prières, une prière que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. ton modre ton pusa ponga bir mo pu yanga sin ya wala pu tun huduga wennam tuntum sallallahu alaihi wasallam da puse ayora buyem ponga la lebe sa tondo ti puse ni la sa tondo me mo ta be pusa ponga bir mo pu kanga हदीसों में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे. Il est mentionné dans les hadiths que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ainsi. ayelam tugul sa alqura tugul sa haditham ponga ti do ning bamba nan karam no gawa tuntum sallallahu alaihi wasallam ra karam dalame अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तकवाहा व ज़क्केहा व अंत खैरो मन ज़क्काहा. ए अल्लाह, मेरे नफ्स को उसका तकवा अता कर और उसको खूब पाक साफ़ कर दे. Oh Allah, accorde la purification à mon âme et il faut le purifier complètement. ayelame ti tuntuma hadith la han karam nin la arbinda belan wennam yelame fo wende yila kuma wen zoyga ti fo wennam la wen zoyga konta wende la flebe yila mam sunrame yila tek tek और तू ही सबसे बेहतर है जो उसको पाक कर सके. Et c'est toi qui es le meilleur personne et la personne qui peut purifier complètement.
tɩ foola wẽnde foola tõog naab ninga tɩ tõe n yɩlg ne saala t'a paam yɩlg n fãa gilli तो दिल भी अल्लाह ताला के फजल से ही पाक हो सकता है। Le cœur et l'esprit ne peut être purifié que par la grâce d'Allah seulement. a yeelame tõnd sã n gese ad n bɩg sũurã ad n bɩg yõora pa tõe n paam wẽn zoɛɛga la a paam yɩlgemde sã n pa wẽnnaam sõngre n naage अल्लाह ताला हम सबको अपने दिलों को पाक करने की तौफीक दे। Qu'Allah nous donne le pouvoir de bien purifier nos âmes. kosa wẽnd d yĩnga tɩ wẽnd na yɩlgd sũyã wẽnd na kõn segl sõngo tɩ bũmb ning wa bũmb ning sẽn na n tall tõnd n kẽng wẽn zoɛɛgã pʋgẽ bõ wẽnd na taa ka n kõdo फिर दिलों को अल्लाह ताला के नूर से भरने के लिए ये देखने के लिए कि कौन सी बातें हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और कौन सी बातें हैं जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म अता फरमाया है, हमें कुरान करीम सीखना और पढ़ना चाहिए। Ensuite, pour remplir nos esprits avec la lumière d'Allah et de savoir quelles sont les choses qu'Allah nous a permis de faire et quelles sont les choses qu'Allah nous a interdit de faire, nous devons étudier le Saint-Coran. b ketame n kõt wẽnnaam d yĩnga tɩ wẽnd na yɩlgd sũyã n pid sũyã me ne wala wẽnnaam nuurã dõn tõog n bãnge ne wa tɩ wẽnnaam nuurã wã pʋgẽ tʋʋm nins wẽnnaam sẽn sag tõnd tõnd tʋʋma n tʋme la d bãng bũmb ning wẽnnaam sẽn ges tõnd tɩ n basa n base n lagem ne wa alqur'ana karengõ ne qur'ana fasengõ जिनको कुरान करीम का तर्जुमा आता है वो दूसरों को सिखाएं। Ceux qui connaissent la traduction du Saint-Coran, ils doivent enseigner aux autres. neb nins wẽnnaam n dɩk alqur'ana minimã n kõ wã bãmb rãmbã me sõm n nidga pãnga n dɩk alqur'ana n karem neb nins sẽn na pa paam alqur'ana bãngra कुरान करीम के दर्स का रोज़ाना जमातों में रिवाज दें, चाहे चंद मिनट का ही हो। Vous devez prendre cette habitude dans toutes les communautés de faire le daras du Saint-Coran, même si ça doit être pour quelques minutes. a yeelame bãmb sagenda zãmã fãa gilli tɩ ned kãm fãa kɛb modg n min sos menga ne wa alqur'ana karengõ wãnkat fãa gilli baa mikame tɩ f sã n na n tõogame n kell wa mil piiga qur'ana kareng yĩnga bɩ f ra yiki beooga tɩ wẽn-toogã tʋg n kẽ tɩ f pa karem alqur'ana ye ताकि जो खुद पढ़ और समझ नहीं सकते उन तक भी ये खूबसूरत तालीम वजाहत के साथ पहुँच जाए। Afin que ceux qui n'arrivent pas à lire le Saint-Coran et qu'ils arrivent à avoir cette beauté de l'enseignement du Saint-Coran. mam gomda koɛɛgre la wẽnd na sõng neb niisi tɩ sẽn na pa me b alqur'ana wẽnd na karem b rãmba neb niis me na pa fasem alqur'ana wẽnd na fasemba तिलावत कुरान करीम तो बहरहाल हर अहमदी को रोज़ाना ज़रूर करनी चाहिए। La récitation du Saint-Coran doit être obligatoire pour chaque Ahmadiyya. tõnd sã n gese alqur'ana karengã qur'an wagl la karengã a yaa bũmbu sẽn sõm n yɩ wa tɩlay ne tõnd wa ahmadiya rãmbã fãa gilli ताकि कुरान करीम की बरक़ात नाजिल हों और दिल तकवा से भरते चले जाएं। Afin que les grâces et les bénédictions du Saint-Coran descendent et remplissent complètement les esprits des gens. b kota wẽnde tɩ bũmb ning sẽn ya wala albark n be alqur'ana pʋgẽ nuurã ning sẽn be alqur'ana pʋgẽ wã wẽnd na sika ning d fãa kɛp sũyẽ wã tɩ d paam n paam wẽn zoɛɛga बल्कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया है कि अगर कोई भी शख्स मोमिन ना भी हो, सिर्फ इंसाफ से काम लेकर कुरान देखे, ना कि जहालत, हसद और बुखल से, तो ये भी तकवा की इब्तदाई शक्ल है। Le Messie premier, il nous a dit, une personne, même s'il n'est pas musulman, mais s'il arrive à bien étudier le Saint-Coran avec le taqwa, avec la crainte d'Allah, ce sera la première étape de taqwa. a yeelame tɩ mahdi yeelame tɩ ned woo ned fãa kɛpɩ n wa n kãng alqur'ana ninsu yɩlgemde la wẽn zoɛɛga baa saba a sã n pa silaama a sã n na pa paas wall paam wala silaamda dĩinã na tũudẽ a yeta t'a pa rɩka wẽn zoɛɛga tagmase a leb n ya zababo n na n sɩ wẽn zoɛɛg me tũubu तो अगर कोई शख्स इस इंसाफ से कुरान करीम पढ़े तो अल्लाह ताला उसको नूर हिदायत दे देता है। Si quelqu'un étudie le Saint-Coran avec cet esprit, Allah lui accorde la lumière. a yeelame ned ning sẽn wa n tɩ rɩka menga n duume ne alqur'ana karengã wẽnnaam na n yɩlga a soaba sũurã wẽnnaam na n dɩka nuurã la wala wẽn zoɛɛga ninga soaba sũurẽ तो जो ईमान ले आए हैं और तकवा की नज़र से कुरान करीम पढ़ते हैं, उनके लिए किस तरह हो सकता है कुरान करीम हिदायत ना दे और तकवा पर ना चलाए। Ceux qui ont cru, ceux qui étudient le Saint-Coran à travers le taqwa, ce serait impossible pour eux que le Saint-Coran ne les guide pas. a yeelame tɩ neb nins sẽn kãndb alqur'ana nin-gãneg n menga la wẽn zoɛɛga a yeelame tɩ wẽnnaam wat lebga bũmb nins n lebg tɩ la ne bãmba tɩ wẽnnaam kãndba अगर एक ईमान लाने वाले के दिल में कुरान करीम पढ़कर और सुनकर नूर हिदायत का जोश पैदा नहीं होता तो फिर इसको फ़िक्र करनी चाहिए।
Si une personne qui est déjà fidèle, qui a déjà cru, et il n'arrive pas à voir la lumière, il n'arrive pas à avoir cette croyance, donc il doit se soucier pour lui. a yeelame tɩ ned wo ned fãa kɛpɩ sẽn wa n kãng alqur'ana wakat fãa tɩ wẽn zoɛɛ pa wata nengẽ tɩ wala pa paam a nuurã sẽn alqur'ana pʋgẽ wã bɩ a saba a sõm n sãama sũur wɩsgo t'a yaa ned ninga wẽnnaam sẽn pag a sab sũuri कि तकवा में कहीं कमी रह रही है। Il doit se soucier qu'il y a quelque part où le taqwa manque chez lui. tõnd sã n gese ned sã wa tʋg n karem alqur'ana n pa tõe tɩrga la a pa paam wẽn zoɛɛga bɩ a sãama sũuri tɩ bala ya bũmb ninga wẽn zoɛɛga ya bũmb sẽn na n gɩdg n nan pa waa sũurẽ wã ye ये सोचना चाहिए कि हमारी बड़ाइयाँ, हमारी खुद पसंदियाँ और हमें असल तालीम से दूर ले जा रही हैं और हम में तकवा नहीं है। Nous devons soucier que nos fiertés et les autres aspects de cette manière nous éloignent de la foi et cela nous éloigne de taqwa. a yeelame tõnd sã n sãam d sũuri la d kell n dũum wa alqur'ana karengã sẽn bilga wẽnnaam sã n sake wẽnnaam na kãnddo wẽnnaam na kõd wẽn zoɛɛga क्योंकि कुरान करीम में तो ने ये कह दिया है कि ये इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। Car le Saint-Coran a dit clairement que dans le Saint-Coran, il y a la direction pour les gens qui ont le taqwa. a yeelame bala alqur'ana meng la sẽn maane qur'ana meng la sẽn gome bɩ gʋlta alqur'ana pʋgẽ tɩ neb woo neba sẽn tẽeg tɩ ne wa alqur'ana karem wã bala wẽnd yeelame tɩ qur'ana pʋgẽ wã a yaa bũmb sẽn ya tẽeg tɩrga la leb ya kãndgo n kõt mumin namba अगर हम कुरान करीम के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे तो ये हमारी गलतियाँ हैं, हमारे लिए फ़िक्र है, फ़िक्र की बात है। Si nous ne pratiquons pas le Saint-Coran, nous devons considérer que ce sont nos fautes et nous devons nous soucier beaucoup à propos de nous. tõnd sã n gese tõnd sã n kãng alqur'ana la tõnd pa gũusd meese n yɩ tods niisi qur'ana sẽn gɩdg tõnda la tõnd leba pa tʋmd qur'ana saglga bɩ d paam n bãnge n zoe n kʋmd meng nimbãanega tɩ sã yaa sɩda tõnd pa rɩng alqur'ana n tʋm bũmb ning wẽnnaam sẽn saglg ye अल्लाह ताला तो हमें अजर देने का वादा भी करता है बशर्ते कि हम उसकी तालीम के मुताबिक हदायत पर कायम हों और नेकियां बजा लाने वाले हों। Allah nous a promis de nous accorder ces récompenses à une seule condition, que nous suivons ces directions avec le taqwa. a yeelame tɩ wẽnnaam maana alkaool n kõ tõndo wẽnnaam gom tɩ na n pid tõnd wẽn zoɛɛga la a maan neemã woo neemã fãa kɛpɩ n kõ tõndo la ya sard n be be sarda mosã tʋʋm fãa kɛpɩ fo sẽn wa n tʋmda bɩ mik tɩ wẽn zoɛɛga n deng taoore जैसे कि वो फरमाता है वमा यफलू मिन खैरिन फलन युकफरू वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन, और जो नेकी भी वो करेंगे तो हरगिज़ उनसे उसके बारे में नाशुक्री का सलूक नहीं किया जाएगा और अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। Comme Allah a dit que chaque œuvre que les gens vont faire, Allah ne les traitera jamais par ingratitude. Ils seront récompensés par rapport à tout ce qu'ils vont faire. bala yãmd wẽnnaam ya alqur'ana pʋgẽ tɩ ned woo neda n yaa pag tɩ ya rawa bũmb ning fo sẽn wa n tʋm ya wala manega tʋʋmde wẽnnaam kõn bas fo n baro la yel-sõmda y la y la y wã ye wã yaa bũmb sẽn gʋlsa alqur'ana pʋgẽ अल्लाह ताला हमें अपने फजल से तकवा पर कायम रहने और नेकियां बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। Qu'Allah nous accorde le pouvoir de s'établir sur les bonnes œuvres et faire de bonnes œuvres. a kosam wẽnde tɩ wẽnna kõ tõnd segl sõngo wẽnna tag ne sũurã ne hakɩɩka la wẽnna kõd wẽn zoɛɛga tɩ d paam n tũ bũmb ning wẽnnaam n sagla la d gɩdg mes ne bũmb ning wẽnnaam sẽn n gɩdga और हम उसके हर उस इनाम से हिस्सा लेने वाले हों जो उसके नज़दीक हमारे लिए बेहतरीन है। Et nous arrivons à avoir le mérite d'être récompensés chaque chose il a précisé pour nous. bala tõnd sã n wa tʋg n paam tɩ wẽn zoɛɛg wa tʋg n bɩ tõnd sũ wã d na n mikame tɩ wãnkat kãngã wẽnnaam sẽn da pʋlem sẽn ya manegd fãa n na n kõ tõnda a na n pid zaa pʋlemda n kõdo हज़रत अबू ज़र बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, तुम जहाँ भी रहो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और बदी के बाद नेकी करो, नेकी बदी के असर को मिटा देती है। Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné les conseils à Hazrat Abu Zar radiallahu ta'ala anhu que tu dois faire de bonnes œuvres où que tu sois, car les bonnes choses effacent les effets des mauvaises choses. e tõnd sã n gese tõnd tʋʋm salallahu alayhi wa sallam ra wa n sagla abu zar tɩ zĩig ning fãa kɛp yaa sẽn wa n tʋg n beem fãa bɩ a modg n tʋʋm sõngo la a modg n zoe wẽnde bala tʋʋm sõngã la wẽnnaam na n dɩk n tusi bɩ wẽnnaam na n dɩk n yẽese tʋʋm beera yẽsda tʋʋm tɩ reng taoora इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जानबूझकर कोई बदी कर दो और उसके बाद फिर कुछ छोटी सी नेकी कह के समझो कि बदी ख़त्म हो गई। Cela ne veut pas dire que vous faites sciemment
quelque chose de mauvais, après vous voulez le récompenser par une petite chose, bonne chose que vous faites. Cela ne peut jamais se faire. a yeelame la rɩla wa tʋg ma n belg tõndo tɩ fo bãng tɩ wẽnnaam wa wẽnnaam sẽn yeele fo sã n tʋm tʋʋm sõngo rɩla na n dɩk n tus ne tʋʋm beeda fo wa zĩig sãmbd mosã tɩ m na n tʋma tʋʋm beedo sẽn ya wɩsgo yaool n maan tʋʋm sõng bilfu n sãmd tʋʋm sõngã n na wɩsa bab n tus tʋʋm beeda tɩ yɩ fe yẽ pa bũmb sẽn zema he बल्कि इसका मतलब ये है कि गलती से अनजाने में कोई बदी हो जाए और फिर उसका एहसास हो, शर्मिंदगी हो, अल्लाह का खौफ हो, तो फिर इस्तग़फ़ार करो और बुराइयां ना करने का अहद करो, तो फिर इसके असरात मिट जाएंगे। Cela veut dire que si par erreur vous avez commis un péché, que maintenant vous avez senti la honte de ce péché, vous devez faire beaucoup istighfar pour effacer l'effet de ce péché. a yeela tɩ bõni bãmb na n sagl tõndo wala sẽn da bilg wa hadisa zugã tɩ tʋʋm sõngã n na wa yẽ tʋʋm beeda ya wala ãdem-biig n ni wa ned fãa kɛp ya yõsgda fo sẽn ni wa yõsg n tʋm tʋʋm beedo bilfa fo reb n sãng mengã sũuri la fo maan nimsa ne bũni fo na tʋm n ya wala sãng tʋʋmda la fo na n kell n tabd sũura la fo na n duume ne wa astagfirullah maanego ya wakat kõng mosla wẽnnaam na n yaaf f zunuuba इसीलिए पहले फरमाया कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, यानी बुराइयों से बचने की कोशिश करते रहो। C'est pour cela, Allah dit qu'il faut que vous optez toujours pour taqwa. Cela veut dire que vous devez éviter et abstenir, essayer d'abstenir de mauvaises choses. ya rɩɩn tɩ tɩ wẽnnaam sagl tõndo tɩ d mod wakat fãa kɛpɩ n zoe wẽnde bala f sã n paam tɩ wẽn zoɛɛga be f sũurẽ wã tʋʋm beedo b pa na n paam ne tʋʋm beed yaase तो फिर अल्लाह ताला भूल चूक माफ़ कर देगा। C'est à ce moment-là que Allah va pardonner vos fautes que vous aviez commises. ya rɩɩn kɩt fo sã wẽn zoɛɛga logr poorẽ wã fo sã n tʋg yõsg n tʋʋm wala tʋʋm beedo sẽn yaa bũmb tʋʋm be valengã ya wakat kãngã mosla wẽnnaam na n yaaf f zunub rãmba फिर रवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे अमल के बारे में दरियाफ्त किया गया जो कसरत से लोगों को जन्नत में दाखिल करने का मूजिब होगा। Ensuite, il a été posé une question au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à une œuvre qui pourra faire rentrer les gens en grand nombre dans le paradis. ya rɩɩn kɩte tɩ b wa n soka लिटा दें लिटा के मल लें, Qui pourra faire rentrer les gens en grand nombre au paradis. ठीक tɩ है। b wa n soka tõnd tʋʋm salallahu alayhi wa sallam tɩ ya wala tʋʋm bogo ya wa yel bog n be be tɩ l kõn tõe n yɩ sababo n kẽes zãma wʋsgo nebã zãma wã kelg n kelg goamã sẽn gomda tɩ wã ya wala wĩntʋʋga zablmã la sẽn kɩta menga yĩngã sẽn wɩngã n kɩta maa yã wã pa yel n ya yel-bõnde zog-tõe be yaa na n ges tʋʋm kãng yelle o bilgame tɩ sahaabga yembr wa n tʋg tʋʋm salallahu alayhi wa sallam tɩ wala tʋʋm bog n be n ya wala sẽn tõe n kẽes zãma sõor wʋsgo arzẽnã pʋgẽ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का तकवा और हुस्न अखलाक। Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça c'est la crainte d'Allah et les bons mœurs. wangar kãngã la tʋm tʋʋm salallahu alayhi wa sallam na n lɛk sʋkda tɩ bũmb ninga sẽn tõe n kẽes zãma sõor wʋsgo arzẽnã pʋgẽ ya wãnkatg ninga b fãa sẽn na n tʋg n paam wẽn zoɛɛga la b na n lobe tõeeg n na n pẽg wẽnnaam neemã rãmba ये बड़ी अच्छी बात है कि इस मुल्क के लोग अमूमी तौर पर बड़े अच्छे अखलाक दिखाते हैं। Ça c'est une chose vraiment extraordinaire que les gens en général ont de bons mœurs dans ce pays. a yeelame tɩ yã wã ya neemã wʋsgo bala tõnd zamaana kaanẽ wã d pẽga wẽnd wʋsgo bala zãma wʋsg fãa kɛpɩ bɩ a kaane n ya wala wẽnnaam wẽn pẽgdba ne neemã ninga sẽn maan n kõba अगर अहमदी होने के बाद इस हुस्न अखलाक के साथ आप में अल्लाह ताला का तकवा भी पैदा हो जाए तो इसके अहकामात पर अमल करने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो फिर अल्लाह ताला के रसूल आपको जन्नत की बिशारत देता है। Si après avoir accepté Ahmadiyya, en plus de ces bonnes mœurs, vous arrivez à avoir le taqwa, donc le prophète d'Allah vous annonce la bonne nouvelle du paradis. a yeelame tõnd zãma wã fãa kɛpɩ sẽn be dãn tẽngr kaanẽ wã tõnd sẽn pẽg wẽnnaamã neemã wã la bõe-yĩnga wẽnnaam wĩnga tõnd la nuurã wã tõnd paama na n leb sake wa tõnd zamaana limaam a yetɩ fo sã wa tʋg wẽnd sã n tʋmda tʋm-tʋʋma fo sak tʋm-tʋʋma yã wã ya neema tɩ tõe n yɩ sababo tɩ wẽnnaam pak arzẽn dag noyã n kõ fo sab leb rɩka wala arzẽn sorme ये जो खुदाम ड्यूटी पे खड़े हैं इनको कहते हैं कि अपने पाँव हिलाते रहें तो फिर सर्कुलेशन ठीक रहती है, नहीं तो इस तरह ही गिरने का खतरा होता है। Le Khalifatul Masih dit que les gens qui sont devant nous, qui sont pour la sécurité, ils doivent essayer de bouger souvent leurs pieds.
Si vous ne bougez pas, c'est pour cette raison vous arrivez à tomber. Sinon, souvent, pendant que vous êtes debout, vous devez essayer de bouger un peu vos pieds, comme ça, la circulation de sang fera que vous n'allez pas sentir cette chose. Huzur ayyadahu ta'ala bi nasrihi al-aziz yelame qudam nism be kawa ngila kom po nism be ka ya hamwa wakaba ndi ya sa to ko wolge ayita sababu tibam me sen yisa waki obna sa ala meto mo ko ezeka te na bido fele kan tidu de ni wa na le be kin ho yin obi sonwa. अच्छा फिर अगली बात यह है कि सिर्फ तकवा के मुताबिक ज़िंदगियों को ढालना और अपनी ज़ात तक महदूद रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी नस्लों में भी ये आला वस्फ पैदा करना है. Le Khalifatul Masih dit qu'il ne suffit pas d'avoir le taqwa pour sa propre personne, mais il est aussi important de faire continuer ce taqwa dans nos générations à venir. Ayé huzur ayyadahu Allah ta'ala bi nasrihi al-aziz be yelame ki wen zo yaga apa bum so mon belin ton ye yembala nke le wa botoye aya bum nke le ton dum nin tondo to tan ka di wala wogalum la lebe ye bum me mbe ton zama porin il par mo la ko mo halan to tan zaman te ka. क्योंकि अगर हमने अपनी नस्लों को अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक चलाने की कोशिश न की तो हमारा तकवा हमारी ज़ात तक ही महदूद रह जाएगा. Si nous n'avons pas fait des efforts par rapport à nos générations, par rapport au taqwa, donc notre taqwa va se limiter seulement à nous-mêmes. Ton sangese wen zo yaga paton wen zo yaga yembala nasik tonde zak soba sawa pa wen zo yaga ta parla kwamba papa wen zo yaga dingi me yella ke le bum hum pawre anema papi de he bam nan bon tondo ton sampa wen zo yaga bille be ya ton na zugu ton parla la kwamba zama wo zama hum po tondo bam me lebe yi sababu mpa wen zo yaga. और हमारे मरने के बाद हमारी नस्लों में ये जारी नहीं रह सकेगा. Et cela ne pourra plus continuer dans nos générations après notre mort. Ayela me ti wanda wen zo yaga ya sabab ya buninga ton so mon dume ton zama po wa halam nan to kon tare abada bada. अगर हमने अपनी नस्लों की सही तरह तरबियत ना की और उनको तकवा पर कायम ना किया तो फिर हमारी नस्लें बिगड़ कर पहले की तरह हो जाएंगी जिसमें कोई दीन नहीं रहेगा. Si nous n'avons pas bien éduqué nos générations, donc nos générations vont redevenir la même chose comme elles étaient avant. Ton sangese ton samba ni panga ngul ton samawa ton pa la kwamba ton sin tasa en sa to pam pam wen zo yaga ton na mi ka ton ba wen zo yaga ba wen nam tunduma la le ga gud pore le ki filma handa sin zaman ko daga. इसलिए हर अहमदी के लिए ज़रूरी है कि जो नूर हिदायत उसने हासिल किया है वो अपनी नस्लों में भी जारी करे ताकि हर आने वाली नस्ल पहले से बढ़कर तकवा की राहों पर चलने वाली हो. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour tout Ahmadiyya, la lumière qu'il a obtenue, qu'il fait continuer cette lumière dans sa génération. Yari ngite tibam sa kan watan zaman kawa si Ahmadiyya lam nemni sun pa man fahamu ba hadi zaman wa ti mo no don pa wen zo yaga la ni pa ti ko amame la pa la din ta fa ki api le pa wen zo yaga ton pa man fahama. हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Monsieur Premier salam il dit ayelam ti Masihul Maud alayhi salam yelame जब तक औलाद की ख्वाहिश महज इस गरज के लिए ना हो कि वो दीनदार और मुत्तकी हो और खुदा ताला की फरमाबरदार होकर उसके दीन के खादम बने, बिल्कुल फजूल बल्कि एक किस्म की मासियत और गुनाह है. Aussi longtemps que vous n'avez pas le désir d'avoir des enfants pour le plaisir d'Allah, donc ce désir va devenir un péché même. Ayelame mahdi yelam ton san wajin ton yira la ton hansin ko ton wen dar kwamba ti kwamba raba sam pa mi kam te wen zo yinga ya fo na to kon pamba to bozo wen lab tun wende wa ya fo niya wa ya fo wen pamba ndo kwamba ay ton san ge menga kom ko ra kuma pana isabam tak ne man kon fo e obna tak wala yel bir bala on kon fo. और बाक़ियात सालिहात की बजाय इसका नाम बाक़ियात सय्यात रखना जायज़ होगा. Et on sera obligé de donner le nom au lieu de Baqiyat Salihat, Baqiyat Sayyat. Ça veut dire ce qui va rester ne sera pas bon, ce sera mauvais. Ayelame ton san wato mar zamawa ndo ar kwamba to ko wen zo ya zugu ton na mi kame ton na te da yuya yiba ton na yuya yiba te da mosa la wen na mi te kel songo nin kel beda ton na mba hakel songa to la kel beda yo ko mun zema la ila yoi यानी नेक नस्ल नहीं बल्कि बद नस्ल. Cela veut dire non pas une bonne génération, ce serait une mauvaise génération. ton san wa yim sir kwamba gul songo to zo wen nam la tun wende ton na mi kan na wala ka wala zamaninga na wa zama yoko yum wat point
अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं साले और खुदा तरस और ख़ादम दीन औलाद की ख्वाहिश करता हूँ, तो उसका ये कहना भी निरा एक दावा ही है, जब तक कि वो ख़ुद अपनी हालत में एक इस्लाह न करे। Si une personne il dit que je désire de bons enfants, cette déclaration ne va rester qu'une déclaration simple, tant que lui-même il ne se change pas son état propre à lui-même. ayelame ti sam mi kame ti ne sar zia me yi de la ko to wen nam ndar yel soma ma ko to wen ndar kwam ya ndar kwamba ya kwam so me ya wen zot ba la yimi nga pati da zo da yi wen zota abil kan ti wala ko ga yin ko da abu mun nan dere wen nam pa nan pizun ko ba la yimi nga nan sa me nga la hala ti wen nam ya lam pizza handa ta ko ya अगर ख़ुद फ़िस्को फजूर की ज़िंदगी बसर करता है और मुंह से कहता है कि मैं साले और मुत्तकी औलाद की ख्वाहिश करता हूँ, तो वो अपने इस दावा में कज़्ज़ाब है। Si lui-même il est plongé dans le péché et dans les mauvaises vies, donc s'il demande une bonne génération, donc il a une fausse déclaration ce qu'il fait. sam mi kame ti ye me nga rugu da wazunu to mpo la me nga pa kita me nga yi yora ya le porbe to na mi kan wakar kanga wennam panan ko ya kom some wennam pa hunu yen ko wennam ndata me wennam panan pizun ko ay साले और मुत्तकी औलाद की ख्वाहिश से पहले ज़रूरी है कि वो ख़ुद अपनी इस्लाह करे और अपनी ज़िंदगी को मुत्तकियाना ज़िंदगी बनावे। Avant le désir de la génération qui doit être bonne, il faut que lui-même il change par rapport à son bon état. zin sagade ndar zama songo zin ko to wennam ndar ko mi ya kom soma ya fo me nga nan ti to me nga alhala yi alhayo ko jang alha songe wakar ko mosa la wennam nan piz fora ban ko fo तब उसकी ऐसी ख्वाहिश एक नतीजा खेज ख्वाहिश होगी और ऐसी औलाद हकीकत में इस काबिल होगी कि इसको बाक़ियात सालिहात का मिस्ताक कहें। C'est à ce moment-là qu'on peut dire que son désir sera réalisé et c'est lui qui va avoir Baqiyatus Salihat. wakar ni fo na yi la ko me nga pa mwen zo ya la fo yi la ko sunu ne ftuma wakar ko wennam nan piz fora ban ko fo ti wala fo yeti bum ni nan kella yi wala nyen sa ndo re fna wa kiye memba kwamba ila be ti baqiyatu salihat baso ya baso ngo ya ne ma baso fo na ngi ko me nga yore am le dunwa wakar ko mo wennam nan ko fo kwamba na yore le fo yi kwam so me yi wen zo atba फिर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पर हम अहमदियों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, Ensuite, le Messie premier, l'Islam, en nous donnant des conseils, surtout, il dit ayen ton sangese mahdi alayhi salam sagala tondo sal ko me la wala gomni ngam nan goma gom da nan poron watunwa बैत की खालिस अगराज के साथ जो खुदा तरसी और तकवा पर मबनी हैं, दुनिया के अगराज को हरगिज़ ना मिलाओ। vous ne devez pas mélanger les objectifs pour atteindre le monde avec les objectifs de Ba'ath. adila yelia mahdi yelame tonali dunuwa yam leda dunuwa no ngalma wato ko ngir yenda ni wala bayo ngasa alhali bayo ngamo tali ko me nga yor nan ko se na to na mi wol so ida sa kan diko dunuwa yam lewo kan dunuwa pogoba wato ko ngir ni wala bayo ngasa dambaye नमाज़ों की पाबंदी करो। Vous devez observer les prières régulièrement. ton so même pose wakata nulam wakata lamba nuwa bisise और तौबा व इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहो। Et vous devez passer votre temps dans le repentir et dans le astaghfar, dans le demander le pardon à Allah. ton so même dumir mesa ni astaghfirullah mango dar me nga ko dole yi watu be dunwa to wen nam nenge ko du nubram bayafo नौए इंसान के हकूक़ की हिफाजत करो और किसी को दुख ना दो। Vous devez protéger les droits de l'homme d'une manière générale et vous ne devez jamais arracher les droits des autres. ton so même gumsul menga yi wala adam bi wekade ton so même gumsul menga yi wen nam bunasa yar sango ila wala adam bi sa hakki damba to même gumsul menga nda wekade kam ne faye रास्तबाजी और पाकीज़गी में तरक्की करो तो अल्लाह ताला हर किस्म का फ़ज़ल कर देगा। Si vous progressez par rapport à votre sincérité, certainement Allah va vous aider. ton san teti daga ton san man me nga suya ila me sa tuma wennam anan ila tondo wennam anan te ton ti daga औरतों को भी अपने घरों में नसीहत करो कि वो नमाज की पाबंदी करें। Vous devez aussi donner des conseils aux femmes qu'elles aussi, elles doivent observer les prières régulièrement. ton somba me libe sa le paraba tuma me de gam pu wakatra ba nuwa obisise और इनको गिला शिकवा और ग़ीबत से रोको। Et vous devez aussi les empêcher de faire beaucoup de plaintes. ton somba me ingi da paraba me to bizan wala yel kiti la tum ni se tum yoda fa ki api somba me ingi da paraba to bi el kan porin
पाकबाजी और रास्तबाजी इनको सिखाओ। Vous devez les enseigner la chasteté. tõnd sõmba me n gɩdg sagl pagba me ni wala manegre la yam tʋʋm fãa gilli और जाहिर है जब तक आप खुद उस पर अमल नहीं करेंगे सिखा भी नहीं सकते। Et c'est sûr, si vous n'arrivez pas à pratiquer vous-même, vous ne pouvez pas les enseigner non plus. tõnd sã n sagl pagba ni wakata nu wã pʋʋsgo la yɛl-sõma tʋʋmbo la wala yam tʋʋma la tõnd na n sagla pagba la ka tõnd menga pa tʋʋmde wãnkar kãnga tõnd saglga pa na n nafe हज़रत मसीह मौद फरमाते हैं हमारी तरफ से सिर्फ समझाना शर्त है, इस पर अमल दरामद करना तुम्हारा काम है। Le Messie premier, il dit que c'est notre devoir de vous expliquer, mais pratiquer ces choses, ça c'est votre travail. la mahadi alayhi salam yeelame bãmb tʋʋmde pa wa modg neba tɩ b tʋ wala bũmb wẽnnaam sẽn sagla ye yaad bãmb menga wa sagl neba ni wala koees bala la yaa neba me tʋʋma neb rɩk bãmba koeesa mosã n kẽes tʋʋm pʋgẽ अल्लाह ताला हमें सही मानों में तकवा पर कायम करे। Qu'Allah nous établisse sur taqwa d'une manière extraordinaire. a yetɩ wẽnna tab ned fãa sũyã ne wẽn-zoɛɛg ninga sẽn yaa wẽn-zoɛɛg wĩndum हम अपनी नस्लों की भी इस तरह तरबियत करें कि वो भी तकवा के आला मयार कायम करने वाली हों। Nous arrivons à éduquer nos générations, que eux aussi ils deviennent un exemple par rapport au taqwa. wẽnna kõt n tõogo tɩ d wubd zãma wã tɩ d wubd pagba la d koamba tɩ bãmba me lebg wẽn-zoatba wa bũmb wẽnnaam sẽn dɩk n kõ tõnda और कभी हम या हमारी नस्लें अल्लाह ताला के अहकामात से दूर जाने वाली ना हों। Et qu'Allah fasse que nos générations ne s'éloignent jamais de la direction d'Allah. wẽnna kõ tõogo tɩ tõnd zãma wã ra wa tog n kõdg b mense n pʋgb yõor yam leedo n kõdg b mense n yi wẽnnaam sora pʋgẽ ye हम सब हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की नसाइहत पर अमल करने वाले हों। Que nous devenons tous ceux qui pratiquent les conseils du Messie premier sallam. wẽnna kõ tõnd tõogo tõnd wa y sababo n tũ koes niisi mahdi alayhi salam wa n tʋg sag tõnd ne koes niisi ya manega tʋʋma अल्लाह ताला के हजूर झुकने वाले हों। Que nous arrivons à nous incliner devant Allah. wẽnna kõ tõnd tõogo tõnd n kõdg d mensã fãa kɛp ned sũyã n togl wẽnde उसका फजल मांगने वाले हों। Que nous arrivons à implorer les grâces d'Allah. tɩ wẽnna kõ tõnd me põogo tɩ d paam n lisi wẽnnaam neemã wã pʋgẽ यहाँ जिस मकसद के लिए इस जलसे में हम इकट्ठे हुए हैं उस मकसद को हासिल करने वाले हों। L'objectif pour lequel nous sommes réunis dans cette réunion, que nous arrivons à obtenir tous ces objectifs. tõnd sẽn leb zẽk n naoora wakaar n tigsgã yĩng wẽnd ning wẽnd tɩ tʋʋm yĩnga wẽnna leb kõ tõnd tõogo la a kõ tõnd neemã nia ning tɩ wa wẽnna pid nia sõngã n kõdo जलसे के दिनों में अल्लाह ताला ख़ास तौर पर हमें दुआओं में मशगूल रहने की तौफीक अता फरमाए। Durant les jours de Jalsa, qu'Allah nous donne le pouvoir de rester tout le temps dans le rappel d'Allah. tɩ bõn wa n be ka zãma wa tigsgã yĩnga wẽnna leb kõ tõnd tõogo tɩ tigsgã yɩ manega tigsgu la leb kõ tõnd bark n be tigsgã pʋgẽ और रूहानियत और तकवा में तरक्की अता फरमाए। Et que Allah nous fait progresser dans la spiritualité. wẽnna kõ tõnd tõogo tɩ d wẽnnaam leb yɩlg tõnd sũyã n leb kõ tõnd tõogo tɩ d kẽng taoore wẽn-zoɛɛg pʋgẽ और जब हम अपने घरों में जहाँ पहुँचें तो हम अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहे हों। Et le moment que nous retournons chez nous, nous arrivons à sentir un grand changement chez nous. wẽnna kõ tõnd tõogo tɩ zã wa yɩ tʋʋmda tigsgã kaa lebg n kʋld yɩa bɩd miki tɩ wala teem ya teem sõngo zĩnda tõnd pʋgẽ wã ताकि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को दुनिया में फैलाने वाले हों। Afin que nous devenons des gens qui répandent la loi envoyée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. tɩ wẽnna kõ tõnd tõogo tɩ d yɩ sababo n tõog n tũudg niisi la saglg niisi tʋm tʋʋm sallallahu alayhi wa sallam sẽn sagl tõnda अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। Qu'Allah nous en donne le pouvoir. wẽnna kõ tõnd tõogo अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر